Assalamu alaikum students. Today's topic for 12th class is loss of biodiversity. There are hardly any new species being added through speciation into the Earth's treasury of species. And there is also no doubt about the continuing losses. It is presently doubtful that if any new species are being added, and there is no doubt about the loss of biodiversity. So far as the biological wealth of our Earth is concerned, our planet is concerned, it has been declining rapidly. And the accusing finger is clearly pointing to human activities. यानी कि इंसान जो है वही इसके पीछे है, उसकी वजह से ही बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है. That is in the colonization. एक एग्जाम्पल है इसकी द colonization of tropical Pacific islands by humans is said to have led to the extinction of more than 2,000 species of birds, 2,000 species of native birds. That is according to IUCN, the Red Book, International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. The Red Book के मुताबिक as soon as human inhabited tropical Pacific islands, 2,000 species of birds, of the native birds, got extinct. Is the data of 2004. In the last 500 years, 784 species got extinct. Among these 784 species, 359 species of invertebrates got extinct, 338 species of vertebrates got extinct, and 87 species of plants also got extinct during this period. Extinct animals. Some of the examples of recent extinctions include dodo, जो कि मॉरिशस में है, कागा अफ्रीका, थैलासीन Australia, Steller sea cow, that is in Russia, and 3 subspecies of tiger, that is Bali, Javan, and Caspian. These are what? Extinct. These are some of the examples of extinct species. In last 20 years alone, 27 species got extinct. In the previous 500 years, 784 species got extinct. That means in a year, that is 1.5 species in a year gets extinct. But in the last 20 years, 27 species have got extinct. And more than 15,500 species of the world are facing the threat of extinction. That includes 12% of bird species, all bird species, 23% of mammal species, 32% of amphibian species, and 31% of gymnosperms are at the verge of facing the threat of extinction. From the records, if we study the history of life on Earth through fossil records, we learn that large-scale losses of species like the ones we are currently witnessing have also happened earlier, even before human appeared on the scene. That is what we mean to say.
Before human appeared on the earth, biomass extensions have occurred in the past. But how far this sixth one, which is in progress, is different from the last five मास एक्सटेंशंस, यानी कि इंसान के दुनिया पे आने से पहले भी मास एक्सटेंशन हुए हैं, लेकिन जो आज का मास एक्सटेंशन है ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस वंस. द डिफरेंस इज इन द रेट, इन द रेट्स. जो आज का है दैट इज द करंट स्पेशीज एक्सटेंशन रेट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 times faster than in the pre-human times, and our activities are responsible for the faster rates. जो आज का मास एक्सटेंशन, सिक्स मास एक्सटेंशन, दिस इज 100 to 1000 times faster than the previous five mass extinctions. और साइंटिस्ट और इकोलॉजिस्ट भी बिलीव करते हैं कि अगर इसी तरह से रेट जो है ये कंटिन्यू रही तो we can lose all the biodiversity in less than 200 years. That is, ecologists warn that if the present trends continue, nearly all of the species on Earth might be lost within next 200 years, in the next 2 centuries. In general, loss of biodiversity in a region may lead to number one, decline in plant production, or number two, lower resistance to environmental perturbations such as drought, or third, increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water loss, and pest and disease cycles. This is the loss of biodiversity in a region may lead decline in plant production, lower resistance to environmental perturbations such as drought, or increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use, pest and disease cycles. Now, what is the cause of this biodiversity? Cause of this biodiversity. The accelerated rate of species extinctions that the world is facing now are largely due to human activities. There are four major causes. The evil quartet is a sobriquet used to describe them. The four major causes क्या हैं? एक, habitat loss and fragmentation, over exploitation second, third, alien species invasion, and fourth, co-extinction. Habitat loss and fragmentation. This is the most important one, important cause of extinction. For example, habitat loss क्या होता है? देखिए एक मिसाल मैं आपको देता हूँ. हम इंसान अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए, कल्टीवेशन के लिए ज़मीन को इस्तेमाल करता है और उससे जो वहाँ पे हैबिटेट होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, दे लॉस दैट हैबिटेट एंड दे डाई. इसी तरह से जंगलों में से हम सड़कें निकालते हैं, रेलवे ट्रैक निकालते हैं और इससे भी जो ये हैबिटेट है इसकी फ्रेगमेंटेशन होती है. अगर हम अमेज़न फॉरेस्ट की बात करेंगे तो एक ज़माने की बात है कि इट वाज कंप्राइजिंग 14% ऑफ द लैंड. नाउ इट इज़ कंप्राइजिंग ओनली 6% ऑफ द लैंड. मैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की बात करता हूँ. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन. The most dramatic example of habitat loss comes from tropical rainforests. Once covering more than 14% of the Earth's land surface, these rainforests are now cover no more than 6% of the land surface, Earth's land surface.
They are being destroyed fast. They are being destroyed fast. They are being destroyed fast. And we can say that by the time we complete this chapter, we finish reading this chapter, uh, about 1000 more hectares of rainforest would have been lost. This Amazon rainforest is so huge that it is called the lungs of the planet. It probably harbors millions of species. Millions of species. This Amazon rainforest, harboring probably millions of species, is being cut and cleared for cultivating soybeans or for conversion of grasslands for raising beef cattle. Besides total loss, the degradation of many habitats by pollution also threatens the survival of many species. As you know, when habitats are broken up into small fragments due to various human activities, mammals and birds regaining large territories and certain animals with migratory habitats are badly affected. And this leads to a population decline. As you know, large animals need large, fragmented, unfragmented territories. सो जब हम उनके हैबिटेट को फ्रैगमेंट्स में चेंज कर देंगे तो उनसे उन पे असर पड़ता है और एंड दिस लीड्स टू डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन. दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन. एक कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का ओवर एक्सप्लॉइटेशन. ओवर एक्सप्लॉइटेशन है क्या एक्चुअली? जहाँ तक ह्यूमंस का ताल्लुक है, वी हैव बीन ऑलवेज डिपेंडेड ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर. But when need turns to greed, it leads to over exploitation of natural resources. यानी हमें चाहिए क्या था, जितना हमें चाहिए था अगर हम उसी का इस्तेमाल करते तो उससे ज़्यादा असर नहीं पड़ता. लेकिन जब हमें लालच बढ़ती है कि हमारे पास ये चीज़ भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, इतना होना चाहिए, हद से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसे क्या होता है, दिस नीड जो है इट टर्न्स इनटू ग्रीड. और जब ये ग्रीड में टर्न हो जाती है एंड इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Many species extinctions in the last 500 years, that is Steeler sea cow, passenger pigeon, were due to overexploitation by humans. Presently, many marine fish populations around the world are overharvested, endangering the continued existence of some commercially important species. यानी जितना हम ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करेंगे उतना इस बायोडाइवर्सिटी पे असर पड़ेगा. एंड दिस विल आल्सो लीड टू द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. थर्ड है एलियन स्पेशीज इन्वेजन. एलियन स्पेशीज आप जानते हैं वो स्पेशीज जो किसी खास एरिया में नहीं हो, बाहर से ला के उसको एरिया में उसको कल्टिवेट किया जाता है या रेज किया जाता है. उससे क्या होता है कि वो एलियन स्पेशीज वहाँ की जो लोकल स्पेशीज है उनके लिए थ्रेट बन सकती है और उनको ख़त्म कर सकती है. इसी को हम कहते हैं एलियन स्पेशीज इन्वेजन. व्हेन एलियन स्पेशीज आर इंट्रोड्यूस्ड unintentionally or deliberately for whatever purposes, क्या भी होगा जहन में, some of them turn invasive and cause decline or extinction of indigenous species. Indigenous वो वहाँ की local species होती हैं. So, for example, the Nile perch introduced into Lake Victoria in East Africa led eventually to the extinction of an ecologically unique assemblage of more than 200 species of sea fish in the lake. You must be familiar with the environmental damage caused and threat posed
to our native species by invasive weed species like carrot, grass, water icon. The recent illegal introduction of the African catfish for aquaculture purposes is posing a threat to the indigenous catfishes in our rivers. कि जितने भी स्पेशीज़ हम बाहर से लाते हैं वो हमारी यहाँ लोकल स्पेशीज़ के लिए एक थ्रेट बन सकती हैं और उनसे लोकल स्पेशीज़ का एक्सटेंशन हो सकता है. दिस इज स्पेशीज़ इन्वेजन. दूसरी है को एग्जिस्टेंस. चौथी, को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि एक स्पेशीज दूसरी स्पेशीज पे डिपेंड करती है. अगर उनमें से एक स्पेशीज ख़त्म हो गई तो दूसरी स्पेशीज डेफिनेटली ख़त्म ही हो जाएगी. Now we can say when a species becomes extinct, जब कोई स्पेशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, the plant and animal species associated with it, जो भी कोई प्लांट स्पेशीज या एनिमल स्पेशीज एसोसिएट इसके साथ होगी इन एन ऑब्लिगेटरी वे. ऑब्लिगेटरी वे मतलब है जो बेनिफिट एक दूसरे से हासिल कर सकते थे. दैट ऑल्सो बिकम्स एक्सटिंक्ट, वो स्पेशी भी ख़त्म हो जाती है. व्हेन ए होस्ट फिश स्पेशी बिकम्स एक्सटिंक्ट, it is unique assemblage of parasites also meets the same fate. होस्ट फिश स्पेशी जब एक्सटिंक्ट हो जाएगी, इसकी जो यूनिक असेंबलेज है पैरासाइट्स की वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. अनदर एग्जांपल इज द केस ऑफ ए co-evolved plant pollinator mutualism, where existence of one invariably leads to the extinction of the other. यानी कि एक दो स्पेशीज जो एसोसिएशन में रहती हो, ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन में रहती हो, अगर उनमें से एक स्पेशी ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी स्पेशी डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी. इसी को हम कहते हैं को एग्जिस्टेंस, को एक्सटिंक्शंस. को एक्सटिंक्शंस, these are some of the causes of biodiversity losses. Thank you students, thank you very much.